Good morning, dear students. As per syllabus, today we will discuss activity 4.9 and 4.12, which is given on the next page number. Okay, so in this activity, we will discuss that how liquids expands more on heating and contracts on cooling. It's very easy activity, beta. You will learn it and write it on the fair notebook also. Even you can perform it at home also if possible. He said fill a narrow mouth bottle with the colored water. You will take a bottle like this. He has taken. He said fill this bottle with the narrow mouth bottle we will take and fill it with the colored water. Now fix a transparent straw that we use to drink cold drinks वगैरह. Use that straw, fix it in the bottle with the help of M-seal. We use that at homes now, M-seal for fixing. Okay, now place the bottle in a bowl of hot water. Now take a bowl, in bowl take hot water and pick it and place into the hot water. He said after few minutes you will see that there is a rise of water in the straw like this. Firstly, you can check beta, the straw was transparent and it was clearly visible. Now when he put the bottle in the hot water, you can see that rise, see the difference, see the rise of water. Getting? He said the water in the bottle will expand and rise in the straw. When you take the bottle out of hot water, जब आप क्या करोगे इसको out of hot water जो है bottle को ले लोगे, the water inside it will cool. Obviously when you take out of the hot water it will cool ना, so it will contract. क्या हो जाएगा? Contract हो जाएगा. And the level of water in the straw will fall. Level क्या हो जाएगा उसका? Fall हो जाएगा. Like this. When you kept it in the hot water, then level of water get rise. And when you take it out, when water got cool, and the level of water falls down. So from this activity, we have learned that liquids expands on heating and contracts on cooling. Okay, so next activity is 4.12, in which we will learn that how gases easily diffuse with each other. He said it is based on this application, gases freely mix with one another. गैसेज जो है एक दूसरे के साथ ईजिली मिक्स कर जाती हैं. जैसे बेटा हम घर पे परफ्यूम, एक कमरे में कोई परफ्यूम यूज़ करता है तो सारे घर के अंदर उसकी खुशबू आनी शुरू हो जाती है. कैसे? बिकॉज जो परफ्यूम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एयर के साथ डिफ्यूज़ हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं. तो एयर तो सारे घर में घूम ही रही है, बाहर तक घूम रही है, तो क्या है, हमें जहाँ भी हम होते हैं हमें खुशबू आ जाती है. Okay, so let's start the activity. He said, take a small piece of copper in a disposable glass. You need to take a disposable glass. Take a small piece of copper. Copper एक metal होती है. Take a small piece of copper in it, and then add a few drops of concentrated nitric acid. Add few drops of concentrated nitric acid. Concentrated are the very strong acids. Acids are of two types. One is dilute, सेकेंड इज़ कंसनट्रेटेड. जो कंसनट्रेटेड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. वही एसिड होते हैं जो आपके लाइक हम सुनते हैं ना कि कपड़ों पे गिरेगा तो कपड़े सड़ जाएंगे, या किसी के फेस पे गिरा फेस सड़ गया, तो ये सारे वही के एसिड होते हैं, कंसनट्रेटेड वन. ओके, ही सेड कि व्हेन यू विल ऐड बोथ द थिंग्स अ रेडिश ब्राउन गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड. व्हेन वी ऐड few drops of nitric acid in copper,
you will get reddish brown gas, nitrogen dioxide. Now cover the glass with the lid. ग्लास के ऊपर क्या है, एक लिड रख दो. Invert an empty glass containing air over the lid. Now आपने क्या करना है, एक empty glass लेना है. Obviously if we have any empty container then definitely it contains gas, it contains air. कोई भी खाली चीज़ है उसके अंदर एयर तो होती ही है. Now invert that empty glass over the lid. लिड के ऊपर ग्लास को रख दो. Remove the lid separating the two glasses and very slowly remove this and leave the glass over the another glass as it is. After a while both the glasses have same color. कुछ टाइम के बाद देखोगे that both the glasses have same color like this. What happens is that the nitrogen dioxide diffuses into air. जो भी एयर इस empty glass के अंदर थी, nitrogen dioxide get diffuses with that air and giving the reddish brown color to the both glasses, right? So from this activity we have learned that gases diffuse very easily and very rapidly. Next activity that we have to do, that is 4.15 activity number. This activity is based on the phenomena process that is called sublimation. I think you all are familiar that what is sublimation. Sublimation is the when solids vaporize without melting. Without melting, solid directly changes to gas, vapors. Because if we talk about the three states of matter, then first one is solid, second is liquid, and then gas. So in sublimation, solid doesn't change to liquid, it directly changes to gas, is called sublimation. He has given you some examples also here. And that he said ammonium chloride, camphor आप लोगों ने सुना होगा, जो कपूर होता है, मंदिर में भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैम्फर. नेफ्थलीन बॉल्स, जो मोथ बॉल्स होती हैं, कपड़ों वगैरह में रखी जाती हैं. एंड आयोडीन आर कॉमन सब्सटेंसेस दैट सबलाइम. सबलाइम मीन्स द सॉलिड thus obtained इज कॉल्ड अ सबलाइम. इस तरह के सॉलिड जो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट आर कॉल्ड सबलाइम्स. सो बेस्ड ऑन दिस आर एक्टिविटीज़. He said heat some iodine or solid ammonium chloride in a dry test tube. We have to take, बेटा इसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, जो उसने ऐसे करके पकड़ी हुई है, ऐसी एक बड़ी सी टेस्ट ट्यूब होगी ग्लास की. He said take it dry, like बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, उसमें मॉइस्चर ना हो. ड्राई टेस्ट ट्यूब लो and heat some iodine, put some iodine, or the another example is ammonium chloride, solid ammonium chloride. Take any one of this, put in the test tube and heat it. The solid vaporize without melting, and you will see when you are heating it, that solid that if you are taking iodine inside it, that iodine without melting directly change to gas, directly change to vapors, right? You will see that you are heating it and it like कई चीज़ें होती हैं ना, जैसे हम बोल देते हैं पेट्रोल है, बोलते हैं घर वाले कि अगर बाइक की टंकी तो इसको खुला मत छोड़ो, ये उड़ जाएगा, बिकॉज वो वेपराइज हो जाता है जल्दी से. ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपनी स्टेट नहीं चेंज करती, जैसे कि अगर कोई कैम्फर है, मुश्क पूर है, उसको आप रखोगे, वो क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, डायरेक्टली वो वेपराइज हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा. सो ऐसे ही हैज़ टेकन आयोडीन inside the dry test tube. He said heat it and you will see that it directly convert to the vapors. Solids vaporize without melting and the vapor directly solidify in a colder part of the test tube. Means जो वेपर्स हैं वो सॉलिड भी वापस से सॉलिड में आ जाते हैं, जहाँ पे उनको कोल्डर पार्ट मिलता है. अगर हीट दोगे तो वो वेपर बन जाएंगे, अगर वो ठंडे हो जाएंगे तो डायरेक्टली सॉलिड में वापस से चेंज हो जाते हैं. So this phenomena is called sublimation. So today we have done 3 activities which were in syllabus. You will read, learn and write on the fair notebook. Thank you, beta.